Hello, all the students. Welcome once again. So today we are going to have the next class on decision making, and we are going to discuss four sets in today's class. So close to 10 or 12 questions we are going to discuss in today's session, and we will ensure that ये जितनी भी questions हम आपके सामने discuss करते हैं, we will keep discussing all the possible varieties which may come in XAT. और इसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक्चुअल जो PYQs हैं उसे भी डिस्कस करेंगे, बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स वी विल कीप डिस्कसिंग. तो प्लीज़ इंश्योर दैट वीडियो को अच्छी तरह से देखो. जो लॉजिक, जो रीजनिंग आपके सामने मैं देना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करें. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वर रिक्वेस्टिंग कि सर जैट की VARC को लेकर भी एक पूरी सीरीज अपन स्टार्ट करें. एंड जैट में स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो कैट के मुकाबले देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस. So students, some questions are based on poems also. At the same time, there is some difference in the way of asking questions. But anyway, in a day or two, हम लोग वो सीरीज भी लॉन्च करेंगे and we will ensure that कि VARC और डिसीजन मेकिंग इन दोनों को लेकर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम ना रहे. एट द सेम टाइम क्वांट फॉर ज़ैट, इसमें अंकित सर की पूरी सीरीज आइकन XAT यूट्यूब चैनल पे चल रही है. तो बस स्टूडेंट्स जुड़ जाएं इस चैनल के साथ एंड एक्सेल हाई इन ज़ैट. तो जिस तरह का फीडबैक बच्चों ने स्नैप और कैट में दिया है, वी विल इंश्योर दैट सिमिलर काइंड ऑफ फीडबैक वी आर गोइंग टू हैव फॉर ज़ैट एज वेल. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये पहला सेट एंड दिस वाज द एक्चुअल सेट व्हिच वी हैड इन ज़ैट 2023 जनवरी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई वांट यू पीपल टू पॉज इट, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गिव द आंसर. तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, बट एनीवे स्टूडेंट्स दिस इज नॉट प्योर क्वांट. ओके, तो कोई बहुत बड़े कैलकुलेशंस कुछ नहीं करना है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे केसेस में हाउ द डिसीजंस हैव टू बी टेकन. तो व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ दोज डिसीजंस. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. टू प्रिपेयर अ डिश, एग्जाम्पल डोसा सांबर और इडली चटनी और राजमा चावल और मावा बाटी. द शेफ हैज to finish 9 activities, some of which could be done simultaneously, while others could not be done simultaneously. See the diagram. So one of the challenges faced by the chef was to precisely calculate the preparation time of a dish and communicate the waiting time to the customers. However, based on the past data, the chef had an idea about approximate time taken to complete each activity. He had noted down the best optimistic, the worst pessimistic, and most likely the most commonly observed time to finish each of the 9 activities. Further, the chef realized that frequency of occurrence of most likely item was 66.66%, and the frequency of occurrence of pessimistic and optimistic times were 16.66% each. The diagram below shows the activities involved, and the table shows the optimistic, pessimistic, and most likely times for each activity. Time is indicated in minutes in the table below. Possibly कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगे इस पूरे डेटा को पढ़कर कि हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, अगर प्राइमा फेसी आपको पढ़ के लगता है कि सर क्लैरिटी इज नॉट देयर, तो आई वुड सजेस्ट कि अपन दूसरे सेट्स की तरफ जा सकते हैं. बट बिलीव मी स्टूडेंट, ये सेट भी बहुत ईजी है. अब इट इज नॉट टफ. Now see students, the point which we people have to keep in mind is there are 9 activities. And 9 activities में if you see this diagram, so you will actually come to know there are some activities जो simultaneously हो सकती है. जैसे for example A से काम start हुआ, अब C, E, F, C, E, H and B, D, F and G, ये चारों activities इन तीनों के साथ simultaneously हो सकती है. इसका मतलब स्टूडेंट्स जब उस शेफ को टाइम इन्वेस्ट करना होता है, तो या तो वो इन 3 में एक्टिविटी में टाइम इन्वेस्ट कर दे, पैरेलल ये चारों भी हो जाएगा, या फिर ये चारों में टाइम इन्वेस्ट करे, पैरेलल ये तीनों भी हो जाएंगे. नाउ एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स कि इन 4 को करने में कितना टाइम लगता है और इन 3 को करने में कितना टाइम लगता है. वी विल सी दैट. एंड फाइनली स्टूडेंट्स आयु से कंप्लीट करके आपके इस टास्क को पूरा करना होता है. नाउ द प्रॉब्लम विद शेफ इज दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट शेफ हैज टू एक्चुअली टेल द कस्टमर्स टेंटेटिवली कितना टाइम लगेगा डिश को सर्व करने में. ओके, और ये कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 3 बेसिस. एक तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, ओके, जो सबसे मिनिमम टाइम है. एक स्टूडेंट मोस्ट पेसिमिस्टिक, मतलब मैक्सिमम टाइम. एंड मोस्ट लाइकली,
At the same time, students, the weightages are given to us. Most likely 2/3%, 2/3, 2 by 3, 66%. This is 1 by 6th and this is 1 by 6th. Okay, चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया. Now let us come on. डेटा तो समझ में आ गया. Let us come on the question. The expected time to prepare the dish is the weighted average of optimistic, pessimistic, and most likely time. So which of the following is the expected wait time for the chef to communicate to the customers? Now see students, इस expected time का calculation कैसे होगा? So that actually becomes the weighted average of these three things: optimistic, pessimistic, and most likely. Okay, चलिए, I guess सभी students को पता होगा weighted average का calculation अपन कैसे करते हैं. पर यहाँ पर students, what you people are supposed to do? I have seen so many students, they often commit a mistake here. वो क्या करेंगे? In 9 items वो add किया कि optimistic time कितना है. Then they will calculate the pessimistic time. Then they will calculate the most likely time. फिर इसे students वो 1 by 6 कर देंगे, इसका भी 1 by 6 और इसका students वो 2 by 3. Okay? Because that is 66%. ये करके numbers को add करके they will try to give the answer. इस पूरे data में students there is a twist. Out of these 9 activities, there are some activities which can be completed simultaneously. So you people see this diagram. जितनी देर में ये 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है पैरेलल, इन 4 एक्टिविटीज़ को भी स्टूडेंट्स अपन कंप्लीट कर सकते हैं. तो अगर मैं सभी एक्टिविटीज़ के टाइम को ऐड करता हूँ तो एक्चुअली मैं टाइम का डुप्लीकेशन कर रहा हूँ. तो वी विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट वी पीपल हैव टू डू, लेट अस डू वन थिंग. हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सी, ई और एच, इन तीनों में लगने वाला टाइम. तो स्टूडेंट्स, इफ आई टेक ऑप्टिमिस्टिक, सी इट बिकम्स 10, ई इट बिकम्स 3 and H it becomes 9. So it becomes 22 minutes optimistic. Okay, जबकि optimistic में students अगर मैं B, D, F, G लेता हूँ, B it is 2, it is 5, 7, 7 plus 1, 8, and G students it becomes 5. So 8 plus 5, 13. Now you people try to understand, अगर मैं optimistic column को देखता हूँ, इन तीनों activities को करने में 22 minutes लगते हैं. अब parallel 13 मिनट्स में ये चारों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 13 मिनट्स हमको अलग से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. ओके, सो डू अंडरस्टैंड, इन 3 में स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. दैट इज द रीज़न दिस नंबर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, चलिए, नाउ वी पीपल हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वेटेड एवरेज. So now students, what you people have to do is, इन चारों का टाइम हम फाइनल कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. हम किसका टाइम इंक्लूड करेंगे? इन तीनों का, देन ए एंड देन आई. तो इन पांचों का टाइम मुझे इंक्लूड करना है एंड देन स्टूडेंट्स आई विल हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज. चलिए करना स्टार्ट करते हैं. ए दिस इज 1, सी 10, ई 3, दिस इज एच 9 and this is I 5. The कुल मिलाकर 22 plus 1 23 plus, so this becomes 28. Okay, and then students pessimistic, same items, same activities, 1 plus 13 14, 14 plus 6 that becomes 20, 20 plus 13 that becomes 33, 33 plus I that becomes 5, so it is 38. Okay, so optimistic time है 28 minutes, pessimistic time है 38 minutes. Most likely, again students, for all these 5 activities, 1 plus 12 that becomes 13, 13 plus 4 that becomes 4, 13 plus 4 that is 17, 17 plus 10, 27 plus 5, this becomes 32. Okay, अब हमें क्या करना है? वेटेड एवरेज. अब स्टूडेंट्स इसका वेट कितना है? 1 by 6. तो लेट अस टेक 1 by 6 हियर. इसका भी वेटेज 1 by 6. टेक 1 by 6 हियर एंड इसका वेटेज है ओके 2 by 3. तो इसका 2 by 3 ले लो और स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो. तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा, तो दिस आंसर इज गोइंग टू बिकम द वेटेड एवरेज. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू कैलकुलेट दिस, द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन 32.3. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. यस, वंडरफुल. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसमें केवल एक ही ट्विस्ट है. आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांटेड टू से. तो जो साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ हैं, वी पीपल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दैट. चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स,
So customer dissatisfaction is the difference of actual waiting time, unexpected waiting time. Actual waiting time is the actual time spent by customer before being served the dish. Unexpected waiting time of the customer is the time communicated by the chef. Now, what is the minimum waiting time? EWT. Okay, that the chef should communicate to minimize customer dissatisfaction. Now, one thing you people will have to understand, we are supposed to take into consideration only these 5 activities because ये चारों तो simultaneously हो ही जाती है. अब इन पांचों activities को complete करने में optimistically we take 28 minutes, pessimistically we take 38 minutes and most likely we take 32 minutes. Okay? अब इन तीनों में से what time chef should communicate to the customer so that customer का जो satisfaction level है वो high रहे या यूं कहूं dissatisfaction level कम हो जाए. Come on, tell me students, what can be the correct answer here? Now try to understand. For example, if the chef shares 28 minutes, but 28 minutes होने के chances तो केवल 1/6 cases में understand. तो possibly students अगर chef ने customer को बता दिया within 28 minutes I am going to serve you और उसके बाद अगर time लगा 38 या 32 तो customer dissatisfaction is going to rise. तो best है अगर chef जो मैक्सिमम टाइम लगता है अगर वही शेयर कर दें तो पॉसिबली स्टूडेंट्स कस्टमर डिससेटिस्फाइड हों इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. Isn't it? So here instead of having an optimistic outlook the chef should take the pessimistic outlook. बेटा जितना मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं जब कोर्स के लिए बच्चे आते हैं तो हो सकता है हम अपना कोर्स 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लें और अगर हमने स्टूडेंट्स को बोला कि वी विल टेक 4 मंथ्स उसके बाद अगर आप 3 मंथ्स में कंप्लीट कर दो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा. But for example, अगर मैंने कहा कि 2 months में we are going to complete the course and then if I take 3 months, the satisfaction level will come down, isn't it? So students do understand यहाँ पर best है कि 38 minutes I should share. Okay? The correct answer is 38. तो जितना maximum time लग सकता है अगर मैं वो share करूँगा तो customer dissatisfaction minimize होगा. Okay? Isn't it? I guess the point is clear. Wonderful. Tell students if you are not very much clear, do let us know in the comment box. And अपना जो भी opinion है, you keep sharing. Coming on, the question, the data remains the same. Directly come on question number 3. Now, which of the following is the most volatile activity for the chef? Now, what is the meaning of volatile? जहाँ पर students जो timing में changes हैं, वो सबसे maximum है. Volatile किसको कहते हैं? Which is most unstable, isn't it? So coming on the first one, H. अब H अगर मैं compare करता हूँ, optimistically I take 9 minutes, pessimistically 13 minutes. So the difference becomes 4. अब यहाँ पर students, this column is not very important. We have to just see maximum time कितना लेता है और minimum time कितना. इसका gap जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, so that becomes the most volatile activity. Coming on students, second option C. C is, this is 10 and this is 13. So the difference is 3. Then you have students G. G में this becomes 5 and 10. The difference is 5. यहाँ पर students difference is 5. Okay. B, the difference is only 1 and E, the difference is only 3. So सबसे ज़्यादा difference है G में. Hence third option becomes the correct answer. I guess the point is clear. So this was the set which was there in XAT 2023 January. और ये तीनों questions एक बार थोड़ा सा logic समझ में आ जाए तो I believe that ये बहुत ज़्यादा tough नहीं है. चलिए students, coming on a very interesting question. This time no mathematical calculation is there, but at the same time, okay, बहुत अच्छी तरह से हमको अपनी analytical skills को use करना है. Okay, चलिए pause करके try to understand the situation and then see what can be done. So this becomes a question about some animosity which is there between the various kingdoms. Okay, so Rose is the queen of kingdom A and Emily is the queen of kingdom B. Both share a common border. They also share a border with kingdom C, a much larger kingdom ruled by King Jonathan, who has expansive ambitions. Though individually their armies were no match to his might, together their armies were more powerful than King Jonathan's army. Jonathan's kingdom also bordered Kingdom K on the opposite side, making Kingdom C a buffer state between Kingdoms A, B and K.
ओके, तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इनका लोकेशन समझ लो। तो possibly A is here, okay, and B is here, and then students you have C here, और इसके इस तरफ आ जाता है A, okay. So Jonathan's kingdom also bordered Kingdom K on the opposite side, making Kingdom C a buffer state between kingdoms A, B, and K. Kingdom K is ruled by King Somersault, who united a group of warring and belligerent tribes. Belligerent का मतलब भी हुआ always fighting. Under his aegis, Kingdom K and Kingdom C had continuous skirmishes with each other. अब स्टूडेंट्स आप देखो, इसका राजा है जोनाथन, ओके। तो सबसे पहले तो दिस मैन हैज एक्सपेंसिव आइडियाज, मतलब कुल मिलाकर मानो ये चाइना है, हमेशा एक्सपैंड करना चाहता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर के साथ भी इसके स्कर्मिशेस चलते रहते हैं, मतलब छोटी मोटी झड़प होती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों क्वींस हैं और इन दोनों की ताकत इतनी नहीं है कि वो जोनाथन को रोक सके, बट इफ दे कम टुगेदर फिर वो जोनाथन को रोक सकते हैं, ओके। नाउ जोनाथन रियलाइज्ड दैट he has limited arms and ammunition to fight on all the three fronts simultaneously. So therefore he planned to double the arms and ammunition, which will take a few years. When this news reached Emily and Rose, they held a secret meeting to discuss the situation. Now, which of the following actions by Emily and Rose will be the best suited to delay Jonathan's plan? Point समझ में आया स्टूडेंट्स? तो जोनाथन चाहता है और वो जानता है इन दोनों से और के से एक साथ फाइट करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए स्टूडेंट जोनाथन इज प्लानिंग दैट लेट मी डबल माई आर्म्स एंड एमुनिशन, बट दैट इज गोइंग टू टेक सम years. And meanwhile, A and B actually came to know about Jonathan's plan. Now, students, the big question is, which of the following actions by Emily and Rose will be best suited to delay Jonathan's plan? The कुल मिलाकर students, we people have to make the best possible strategy. Okay, और strategy कहते किसको हैं? A very effective strategy is such where you actually win the war without fighting it. तो अब मुझे बताओ students, इन 5 options में से which is the best answer? Coming on the first one, Emily and Rose should send arms and ammunition to Somersault for the next few years. Okay, you mean to say that ये दोनों kingdoms अपने arms and ammunitions किसको देंगे? A को देंगे, Somersault को. Is it logical? And इससे क्या होगा students? Okay, इससे how are you going to stop Jonathan from pursuing his plan? I don't agree. First option is illogical. Coming on the second one, the two queens should meet Jonathan and attempt to sign a peace pact. Okay, now you people try to understand. Jonathan has expensive ambitions. अगर A और B ने या दोनों क्वींस ने जोनाथन के साथ एक पीस पैक्ट कर लिया, तो पॉसिबली स्टूडेंट्स दैट विल गिव मोर टाइम टू जोनाथन टू एक्चुअली बिल्ड अप आर्म्स एंड अम्युनिशन. तो यहाँ पर पीस पैक्ट करना इज नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन, बिकॉज व्हेन वी नो दैट उसका एक्सपैंड करने का प्लान है. आप चाइना के साथ स्टूडेंट्स कितनी भी शांति समझौता कर लो, चाइना इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स नेचर, बिकॉज सिंस एजेस वी सी दैट दिस कंट्री हैज गॉट एक्सपेंसिव एम्बिशंस. So even B is not a logical answer. Possibly कुछ students को हो सकता है B लगे, but try to understand the kind of situation which is given to us. B is not possible. Third, Emily and Rose should also double their armies. क्या लगता है students? C is okay. Emily and Rose should also double their armies. But try to understand. The point is हमें जोनाथन को रोकना है ताकि वो इस प्लान पर आगे न बढ़ सके. Okay, डिले करना है उसके प्लान को. अब स्टूडेंट्स अगर मान लो जोनाथन ने अपनी आर्मी को डबल कर दिया इन अ फ्यू इयर्स और एमिली रोज शुड आल्सो डबल देयर आर्मीज, तो बाय दिस पॉसिबली इन फ्यूचर इफ अ वॉर टेक्स प्लेस एमिली एंड रोज विल बी एबल टू काउंटर जोनाथन. बट स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन बेस्ट सूटेड टू डिले जोनाथन्स प्लान. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हमें जोनाथन के प्लान को डिले करना है, हमें फ्यूचर में अपनी रक्षा करनी है, दैट इज नॉट द पॉइंट. इसीलिए डिसीजन मेकिंग में यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी मच प्रॉपरली. कमिंग ऑन फोर्थ, एमिली एंड रोज शुड अटैक जोनाथन इमीडिएटली. ओके, एंड द टू क्वींस शुड इग्नोर द न्यूज. एनीवे, फिफ्थ ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सी पॉसिबली कुछ बच्चों को लगे,
But anyway, students, the correct answer is fourth option. I'll go with fourth option because this is the only way how actually you can stop Jonathan or delay, you can force Jonathan to delay his plan. आप जस्ट इमेजिन करो स्टूडेंट्स, एक बार कुछ साल तक आपने जोनाथन को टाइम दे दिया और उसने आर्म्स एंड एमुनिशंस को डबल कर दिया, व्हाट विल हैपन देन? उसके बाद स्टूडेंट्स ही इज गोइंग टू बिकम अनबीटेबल एंड पॉसिबली आपने भी अपनी आर्मी को डबल कर दिया, तो द वॉर इज गोइंग टू बी मोर डेंजरस. एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड, विल नॉट बी एबल टू डिले जोनाथन. ओके, बट व्हाट दीज टू क्वींस कैन डू, इन्हें पता है हम अगर एक हो जाए तो जोनाथन से फाइट करना इज पॉसिबल. तो अभी अटैक कर दो ताकि जोनाथन वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स उसका प्लान डिले हो जाएगा. इजंट इट? तो द बेस्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, राइट. जोनाथन को स्ट्रॉन्ग बनने ही मत दो, दैट इज द पॉइंट. चलिए, कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन. जोनाथन एम्स टू इन्वेड an annexed kingdom के once and for all. Okay, so which of the following options will best enable him to accomplish the ambition? Okay, so the same data is given to us, but try to understand. Last question में जो भी data दे रखा था, we are not supposed to use here. यहाँ पर we have to give the answer purely on the basis of this line. Okay, Jonathan aims to invade an annexed kingdom के once and for all. So keeping these points in mind, we have to give the answer here. So which of the following options will best enable him to accomplish the ambition? First, he should request the cooperation of Queen Rose and Queen Emily. Okay, okay. कि आप दोनों मुझे कॉपरेट करें ताकि मैं के को जीत जाऊं, और एक बार मैं के को जीत जाऊं उसके बाद मुझे तो एक्सपैंड करना है. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अटैक योर किंगडम्स ऑल्सो, एंड देन आई एम गोइंग टू बिकम द होल एंड सोल किंग ऑफ द कंप्लीट रीजन. Students, first is not at all possible because Queen Rose and Emily, अब ये दोनों जोनाथन को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके एक्सपेंसिव आइडियाज़ को समझते हैं. हिटलर ने यही तो किया था. हिटलर ने रशिया के साथ सबसे पहले एक सीक्रेट ट्रीटी की कि आई एम गोइंग टू अटैक पोलैंड, आई एम गोइंग टू अटैक द नियर बाई कंट्रीज इन यूरोप. बस तुम्हें क्या करना है, चुप बैठना है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, जैसे हिटलर ने यूरोपियन कंट्रीज को जीता, आफ्टर दैट Hitler attacked Russia also, but then USSR. So anyway, students, first option is not correct because the queens will not agree with this. He should sign a peace pact with Queen Rose and Queen Emily. Okay, चाहे वो cooperation सीख करें या फिर peace pact, मुझे लगता है दोनों queens agree नहीं करेगी because उन्हें पता है एक बार अगर जोनाथन और strong हो गया तो he is going to become a threat for these queens also. See, he should try and create a rift between the two queens. The question is not that. The question is Jonathan actually wants to annex kingdom K. तो अगर दोनों queens के बीच में rift अगर उसने बना भी दिया, okay, but फिर भी students उसको kingdom K को जीतना है. And try to understand situation क्या है. Okay, Jonathan is here, K is here, and A and B, these two kingdoms are here. तो इन दोनों के बीच में rift अगर मैं create कर भी देता हूँ, okay, फिर भी students, and moreover these queens very well understand, okay, what are the ambitions of Jonathan. तो possibly queens भी अगर थोड़ी भी समझदार है, okay, तो ये rift इस trap में नहीं फंसेगी. चलो देखते हैं और कोई ऑप्शन हो तो. He should secretly invest in doubling his army by reducing all other expenditure. I think fourth option is suitable. Secretly keep investing in doubling his army by reducing all other expenditure. कल मिलाकर स्टूडेंट्स, अगर जोनाथन अपनी आर्मी में सीक्रेटली इन्वेस्ट करता रहे, ओके, ना तो क्वींस को पता चलेगा, ना सी को पता चलेगा, और ना के किंगडम को पता चलेगा. एंड वंस जोनाथन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन ही कैन अटैक के एंड अनेक्स इट, ओके, फॉर एवर. सो आई थिंक डी कैन बी अ सुटेबल चॉइस. He should attack all three kingdoms simultaneously, giving them no time to cooperate. This option is not possible because question में clear cut दे रखा है. Jonathan will not be able to fight with all the three kingdoms simultaneously. ऐसा कहीं mentioned है? I guess more powerful than kingdom also bordered, making C a buffer state. Who is united? ठीक है. Anyway, that point is given in the previous question. चलो उस थीटा को अगर मैं यूज ना भी करूं तो भी one thing is very clear. तीनों फ्रंट्स पर एक साथ बैटल करना,
that is actually going to hamper the prospects of Jonathan in annexing Kingdom K. So even this option is not correct. तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर है दैट इज डी. तो डी बिकम्स द बेस्ट आंसर. चुपचाप काम करते रहो, अपनी आर्मी को बढ़ाओ एंड फिर मौका देखकर आप के को अनेक्स कर लो. ओके, आई गेस यू पीपल एग्री विद दिस. परफेक्ट. Now coming on the third question, which is based on the same set. King Somersault was growing tired of the warring tribes who slowed down the overall economic development of Kingdom K. So which of the following is the best option for King Somersault to focus on economic development? We people know that actually इसके kingdom में बहुत सारे warring tribes हैं, and because of that, okay, he is tired, and because of that the economic process has slowed down. So question number 3 में क्या लगता है students, which is the best answer? So which of the following is the best option for King Somersault to focus on economic development? First option, align with Jonathan to eliminate one or two of the tribes and instill fear in others. But try to understand, Jonathan के साथ तो वैसे भी Somersault के skirmishes चलते रहते हैं, तो अपने दुश्मन के साथ unite हो पाना या align हो पाना will not be possible. Okay, and that is going to be like it may be suicidal. तो Jonathan के साथ ही आप अगर unify हो जाते हैं, align हो जाते हैं, तो I don't think so that is feasible. And moreover, the same Jonathan can become a threat for King Somersault in future. Align with the two queens to eliminate a few tribes and unify the rest. This option can still be possible, though some geographical constraints are there. I do understand because दोनों queens दूर हैं, बीच में Jonathan है और उसके बाद Kingdom K है. But anyway, the best part here is Kingdom K does not have any kind of bad relationship with these two queens. तो पॉसिबली अगर क्वींस की कहीं पर हेल्प ले लें, ओके, एंड कुछ ट्राइब्स को एलिमिनेट करके बाकी सारे ट्राइब्स को अपने आप स्टूडेंट्स अगर कुछ ट्राइब्स को एलिमिनेट कर दिया, the other tribes they will get scared, and then he can unify them and then focus on the economic development. So B seems to be okay here. Design annual economic plans with each plan named after a different tribe makes no sense at all. Create a rift between among the tribes and instigate a civil war. इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्पॉइल हो जाएगा. एंड रिक्वेस्ट जोनाथन टू सेंड टीचर्स, डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ किंगडम के. रूट जो कॉज है वॉरिंग ट्राइब्स, उस पर तो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस इन दिस ऑप्शन. द स्टूडेंट्स, द बेस्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. आई होप यू पीपल एग्री. डन. चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ. So here comes the third set, and on the basis of this also you will be having 3 questions, and even this set becomes an actual XAT PYQ. Okay, pause it, try to understand, give the answer. And हमेशा आप देखोगे 5 options में से students 2 या 3 options तो we can rule out, but बचे हुए जो 2 options हैं वो काफ़ी confusing होते हैं, and decision making में critical thinking becomes very very important. चलो, let us start solving this question. Dilip Dosan sells dosas in front of an upscale hospital at a city in Punjab. He only sells 2 varieties of dosas, plain 25 rupees and masala 40 rupees. His dosa stall is popular amongst the hospital staff members. ये बहुत important है. Okay, ऐसे students paragraph को पढ़ते समय we will have to understand which points are very important, because these are the key points on the basis of which we will have to decide the answers. और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला भी था, सभी स्टेक होल्डर्स को हमें साथ में लेकर चलना है. ओके, तो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट हमें मैक्सिमाइज करना है. राइट, who mostly hail from South India and form his core clientele. They frequent his stall during office hours. Okay, during office hours. Even this is important, as they find his dosas to be reasonably priced. Okay, तो एक और बड़ा important reason क्या है? Reasonably priced. Though the hospital staff members can visit the upscale food court on the top floor of the hospital, they prefer his stall for breakfast and lunch, and even for occasional evening snack. His daily sale volume varies between 300 and 400 dosas, in which the demand for masala dosas is around 50 to 60%. Okay. Now one day, Dilip, while walking through the hospital food court, sees a vacant spot. He wonders if he can shift his stall to that spot. Okay.
You people try to understand, ये जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके पास भी चॉइस है, तो एक्चुअली उसी फूड कोर्ट में जाकर, विच इज़ an upscale फूड कोर्ट, वहाँ पर जाकर भी दे कैन हैव द मील्स, बट एक्चुअली इसके जो डोसाज हैं वो रीजनेबली प्राइस्ड हैं, हेंस दे प्रिफर हिज स्टॉल. अब वन डे व्हाट हैपेंड इज, दलित ने ओके उस फूड कोर्ट में एक जगह देखी एंड ही वांटेड कि मैं वहाँ पर अपनी स्टॉल को शिफ्ट कर लूँ. So which of the following information will dissuade him the most from shifting his stall to the food court? So here the point is dissuade. Okay. So we need to find out such a reason, okay, which will actually demotivate Dilip from shifting his stall. चलिए सभी ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करूं. First one. On inquiry, he learnt that the cheapest dish in the food court is priced at 200 rupees. Okay, possibly this becomes an advantage also. कि अगर cheapest dish ही 200 की है और इसका डोसा अगर थोड़ा सा सस्ता होगा तो definitely okay, that competitive advantage will be there. But at the same time, you people have to presume one thing. स्टॉल जहाँ पर ये लगाता है वहाँ पर तो स्टूडेंट्स रेंट वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बट अगर आप उस फूड कोर्ट में जाते हो तो डेफिनेटली योर कॉस्टिंग इज गोइंग टू राइज. सो नाउ सर्विंग डोसाज एट 25 and 40 may not be possible for him. और ये जो 200 रुपीज़ का मिनिमम प्राइस है किसी भी डिश का, that itself gives an impression that the food court is costly. Okay. अच्छा, there can be one more perception here. Possibly when the cheapest dish is 200 rupees, possibly जो हॉस्पिटल स्टाफ है अब क्या उसका वॉक इन ही नहीं होता होगा फूड कोर्ट में, बिकॉज द परसेप्शन इज इट इज़ एक्चुअली वेरी कॉस्टली. अब ऐसे फूड कोर्ट में अगर दिलीप जाकर एक सस्ता डोसा बेच भी दे तो ध्यान रखना बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, दे विल एनीवे नॉट वॉक इन द फूड कोर्ट, इवन दैट प्रोबेबिलिटी इज देयर. बट एनीवे, फर्स्ट ऑप्शन वी विल डिस्कस इट in detail a bit later. Coming on the second one, the food court has no other stall selling dosas. So I think this becomes an advantage. Okay, so this point is not dissuading. So anyway, students, second option cannot be the correct answer. हमें ऐसा पॉइंट पता करना स्टूडेंट्स जो दिलीप को डीमोटिवेट करें. अगर उस फूड कोर्ट में डोसा का कोई स्टॉल ही नहीं है तो दैट बिकम्स एन एडवांटेज फॉर दिलीप. ओके, सो स्टूडेंट्स, सेकेंड, इट विल एक्चुअली एनकरेज दिलीप. Third, the food court closes by 10:30 p.m. though his current stall is open till midnight. हाँ, पॉइंट नंबर सी थोड़ा सा डिसुएट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट मुझे लगता है पॉइंट नंबर सी बहुत बड़ा रीज़न फॉर डिसुएशन नहीं है. एंड व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज जो सबसे बड़ा क्लाइंटेल है, कोर क्लाइंटेल, दैट इज द हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स. एंड जनरली स्टूडेंट्स वो ऑफिस आवर्स में ही स्टॉल्स को विजिट करते हैं. They come for breakfast, they come for lunch and sometimes for evening snacks. So अगर possibly food court में है, even if the stall is open till 10:30 p.m. okay, and not till midnight, फिर भी मुझे लगता है कि उसके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. अंडरस्टैंड? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर वो 10:30 p.m. तक फूड कोर्ट में अपनी स्टॉल को बंद भी कर दें तो एनीवे द कोर क्लाइंटेल will not get disturbed, at least because of the time. So this, though it seems, but still it is not a point of dissuasion. Coming on fourth, all the restaurants in the food court except the fast food stalls sell North Indian meal during lunchtime. This actually becomes an encouragement for Dilip. अगर सब नॉर्थ इंडियन है और ये साउथ इंडियन है, इसको तो बेनिफिट मिलेगा. So anyway, students, this does not become the point of dissuasion. Fifth one, the food court sees a daily footfall of about 5,000 people. ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है. So even this does not become a point of dissuasion. So students, if I compare all the options, possibly थोड़ा बहुत A and थोड़ा बहुत C. लेकिन C मुझे नहीं लगता that is the correct answer because इससे core clientele disturb नहीं होता है. Now coming on students, point A. I do understand and I do agree. बहुत सारे students को point A नहीं समझ में आएगा. They will think like when the cheapest dish is of 200 rupees, then his dosas, which are actually very reasonably priced, for him it becomes an advantage. He is going to have the competitive advantage. But try to understand the other side of the story. And what is the other side? ये 200 rupees का cheapest dish
that gives a perception that that place is very costly. Okay, so possibly जो customers वहाँ पर आते होंगे वो बहुत well off होंगे, understand? तो हो सकता है इसका जो core clientele है, hospital का staff, वो actually food court में आकर इसके stall में है. Okay, food लेगा, meals लेगा, डोसास खाएगा. Okay, इसके chances मुझे लगता है कहीं that becomes a discouragement. It can become a discouragement for the hospital staff. And second, anyway, this 200 rupees price, it gives a perception like if he goes to food court, again he will have to raise his prices for dosas because rent होगा, कुछ और खर्चे भी होंगे, understand? तो मुझे लगता है second, it actually becomes the point of dissuasion. Though prima facie it seems like okay, it is going to give a competitive advantage to the lab. But deeper insight, deeper analysis will prove that first option should be the correct answer. It is going to dissuade Philip from shifting to food court. So I'll go with first option. You people can give your opinion. Coming on, students, the second one. Philip shifts his stall to the hospital food court. He prices his plain dosa at 40 and masala dosa at 60. However, 2 months on, he is serving only about 150 dosas per day. The clientele is mostly the same hospital staff members who had been his customers before he moved to the food court. So which of the following actions will best help Dilip in increasing his sales? So finally, students, case समझ में आ गया. Dosas की sale कम हो गई because he had to increase the price of dosas. हालांकि अभी भी students आप देखोगे जो core clientele है वो hospital का staff ही है. Now, among the 5 options, which is the best step Dilip should take? Add more varieties of dosas at higher price points and reduce plain and masala dosa prices to 25 and 40. I think first option बहुत ही reasonable है and first option Dilip की problem को solve कर सकता है. One, students, the moment you will keep the price 25 and 40, तो जो hospital staff disconnect हो गया वो वापस से connect होगा. Second, you can have some other varieties of dosas at higher price points. So this will help Dilip to conquer or to capture those customers also who were actually till now not coming to his stall. Okay, and moreover, this higher price is going to give better revenue to Dilip. So I think if we take the first option, one, we are able to get back okay, our core clientele. At the same time, okay, we can attract several other customers and we can have better revenue because for some dosas the prices are going to be high. And anyway, students, we see when I was very young, to dosas the variety सिर्फ दो होती थी, plain and masala. But nowadays we see in our town there are hundreds of flavors in dosas as well. ऐसा ही कुछ Dilip भी कर ले तो better है. Introduce a South Indian meal exclusively for the hospital staff. Not at all. पहली चीज तो वो डोसा anyway सर्व कर रहा है. Second, South Indian meal कुछ नया अगर वो इंट्रोड्यूस करता है तो आई थिंक उसका जो कोर एक्सपर्टीज है डोसास, ओके, वो एक्सपर्टीज पर ही अगर वो काम करे तो ज़्यादा बेटर है, isn't it? एक नया मील इंट्रोड्यूस करना फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ, एनीवे दैट इज नॉट गोइंग टू connect them back, okay, because they got disconnected not because of the food quality, not because of the variety, they actually got disconnected because of the price, understand? ओके, तो अगर 40 रुपीज़ में आपने कोई नया साउथ इंडियन मील लॉन्च कर दिया तो डोसा थोड़ी है वो, अंडरस्टैंड? तो सेकंड इज नॉट करेक्ट. इंट्रोड्यूस अ नॉर्थ इंडियन मील, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट हिज एक्सपर्टीज. इंक्रीज प्राइसेस ऑफ ऑल द फूड आइटम्स बाय 50% एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू शेजवान डोसा एट 200 अ प्लेट. ओके, ऑलराइट, अगर आप प्राइसेस को इंक्रीज करोगे तो आई बिलीव दैट जो कोर क्लाइंटेल अभी जो 150 डोसास की सेल है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी. ओके, तो एनीवे स्टूडेंट्स, दिस आइडिया इज नॉट वर्किंग. Reduce price by 20% for hospital staff and increase the price by 50% for others. I think if you keep differential pricing of the same product, even that is not going to work. Why the other customers will come then when you are offering the same product to some other customer at a very low price? If you can differentiate in the product, well and good. So I'll go with product differentiation. So first option becomes the correct answer, absolutely. Coming on, students, on the first anniversary of a stall at the food court, Dilip reviews his customer base. Almost all of his customers are the hospital staff members.
Though he wishes to serve the general visitors at the hospital, they avoid his stall. On inquiring, he discovers that visitors generally avoid his stall because it is majorly frequented by the hospital staff members, giving it a feel of a staff canteen. Dilip realizes his best efforts have not given him any extra sales, and the visitors can potentially increase his revenue by a considerable amount. So, which of the following options can best help Dilip in discouraging hospital sorry, members from visiting his stall while increasing his overall revenue? I think you people have understood what is the problem Dilip is facing. Actually, the problem is the other customers are not coming because majorly the core clientele, hospital staff, okay, वो इतना भरा रहता है उसका stall. So it seems like it is actually a staff canteen. So now what Dilip has to do so that he can attract the other customers as well. So among the 4 options, 5 options, if you go through, first one, provide a discount to those hospital staff members who order on phone and deliver food in their staff room. I think students' first option seems to be very, very reasonable. And this is absolutely logical. Okay, if you give this discount, possibly the frequency or the number of hospital staff members who keep visiting his stall, that number may come down. And once that number comes down, that perception that it's a staff canteen, he'll be able to kill that perception. And that is going to attract the other customers. So I think first option is correct. You can go through the other options as well. Appeal to the hospital management to give a space in the staff room, not at all. Okay, why the hospital management is going to give this? And introduce a massive discount on price for the next 2 months to increase the footfall. Again, that is not going to help us understand. The problem is somewhat different. The problem is not pricing right now. Okay. The problem is the perception that it's a staff canteen. We need to kill that. To charge the hospital staff members a premium to offset the losses due to their presence. How is it possible? The moment you start doing this, it will no more remain a staff canteen also then. Request the hospital management to prohibit hospital staff from entering the food court. That is the core clientele, Baba. How is it possible? Okay, so anyway, there is only one option which is possible. Now, this question was easy. Why this question was easy? Because आप देखो कि options बहुत confusing नहीं है. Okay, when you compare all these questions which we have taken today, in some of the questions, the options were quite confusing. Okay, in some of the questions, हम more or less थोड़ा सा logic लगाओगे, and actually students अब देखो, 3 options rule out करना is not a big deal. बस 2 वहाँ तक पहुँच जाओ, and then students be critical and take a decision. This is how you people can actually excel in decision making. Anyway, students, मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ. I was supposed to take one more set, but due to some shortage of time, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ. The next set we are going to discuss in the next class. So, students, yes, your support is solicited. बस इसी तरह से लगे रहो हमारे साथ. And VRC की series भी we are going to start very soon for XAT. All the best.